Assalamu alaikum, everyone. I hope you guys are all well. So let's start this session. In this particular session, what I'm going to do is I'm going to do the more difficult questions from the November 2022 papers. And hopefully, if we have enough time, I'll have another session tonight. जिसमें हम June 2022 वाले questions भी inshallah cover करेंगे. All right, so that's the plan for this particular class. Before we start, let me just remind you, if you look at the description below, you have a lot of other useful content on this channel for O-level art maths as well. You'll find a playlist in the description that covers almost the complete syllabus. उसमें आपको उसकी पूरी class recordings मिल जाएंगी. That was actually primarily aimed at A-level maths, लेकिन क्योंकि ad maths और A-level का paper 1 जो उसमें there is a lot that is in common. Almost 90% of the syllabus is the same. So I've made a playlist that includes all the topics that you have in ad maths that are common with A-level paper 1. तो उसमें आपको सारे वो topics covered मिल जाएंगे if you want to have a look at any particular topic in detail. You'll also find some quick revision videos. एक उसकी भी playlist आपको मिलेगी नीचे description में. You can also have a look at that. That's really helpful before the exams. आपको एक quick revision मिल जाती है सारे concepts के जो आपको चाहिए different topics के लिए. And there's another playlist by the name of yearly past papers. अभी I'll keep adding to that playlist. अभी इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, but hopefully before paper 2, you will have more content there as well. All right, so in this particular session, I'm going to be doing these specific questions from November 2022. You can see the list on the left side here. Paper 1, 2 से हम ये questions कर रहे होंगे 1, 2, 4, 9, 10, and then November 2022 paper 1, 3 उससे हम ये 4 questions करेंगे 5, 10, 11, 12, and then paper 2, 2, 3, 4, 6, 11, or paper 2, 3 से 8, 9, 10, 11. These are, so I've gone through all of these papers and picked out the questions that were more difficult. Okay, so let's begin with this. ये पूरे papers हम आजकल नहीं कर सकते हैं because there is a copyright restriction. But what we can do is we can have a look at some specific questions from each of these papers, and that is what I plan to do in this particular session. All right, so let's begin with this then. I'm going to start with the first paper, November 2022, paper 1, variant 2. Let's start with this. Let's take question number 1 से हम start करें. Let's start with this one. All right, so the diagram shows the graph of y equals a sine bx plus c, where a, b, and c are integers. We need to find the values of a, b, and c. अच्छा, ये sine का graph है. Sine के graph में आपको पता है amplitude क्या होता है? Amplitude is 1, right? And the period of the graph, if it's in radians, that is 2 pi. 2 pi में पूरा cycle complete करता है graph, और इसका जो amplitude होता है वो 1 होता है. अब इस फॉर्म के अंदर जब आप किसी नंबर से बाहर मल्टीप्लाई करते हो या फिर x को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो अंदर, या फिर कोई चीज ऐड करते हो बाहर, तो आपकी क्या चीजें चेंज हो रही होती हैं? A represents the amplitude of the graph. The number that is multiplied outside, that represents the amplitude. B आपको क्या बताता है? आपके ग्राफ की फ्रीक्वेंसी के 2 पाई के इंटरवल में आपका ग्राफ कितने साइकिल्स कंप्लीट करेगा. Another way to think about that is कि जो भी आपका ओरिजिनल पीरियड था, न्यू पीरियड क्या हो जाएगा? New period of the graph is going to be the original period, which is 2 pi divided by this number b. That's another way of thinking about that. और c क्या होता है? c होती है आपकी बेसलाइन ग्राफ की. ग्राफ की बेसलाइन पहले ओरिजिनल ग्राफ की, तो ये x एक्सिस होती है. This is the baseline of the original graph. तो वो आपने देखनी है बेसलाइन कहाँ चलेगी, और उसके हिसाब से आप c की वैल्यू भी लग सकता है. All right. Walaikum assalam, Danish and Mustafa. Good to see you here. Okay. Now let's start with this. Amplitude is graph का क्या है? Amplitude आप कैसे देखते हो? Baseline देखें कहाँ पे चलेगी? Baseline is the middle of the graph. ये आप line देखें. This is the baseline, right? जो maximum point और minimum point के बिल्कुल center में line है. This is the baseline, right? Baseline से आप देखें कितना maximum distance है. This is the amplitude of the graph, right? How many units is this? This is 2 units, right? This is 2 units. तो जो आपकी a की value यहाँ पे वो क्या होनी चाहिए? The value of a therefore should be equal to 2. Okay.
Then C is the relatively easier one. First of all, हमने already baseline figure out कर लिया. Baseline originally क्या थी? Originally तो y equals 0 पे होती है. वो अब कहाँ चलेगी है? वो नीचे चलेगी है इस point के ऊपर. What is that point? -4. Y की value यहाँ पे क्या है? -4. तो ये जो C है, C represents the baseline. तो baseline आपकी -4 पे चले गई है. C की value क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी -4. So A and C were relatively more straightforward to figure out. अब हम देख लेते हैं B क्या होगा. Again, as I said, there are two ways of thinking about that. या तो आप फ्रीक्वेंसी का सोच लें, 2 पाई के इंटरवल में देखें कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं. अब ये इंटरवल कितना है देखें, -पाई से लेकर पाई तक. दिस इज एन इंटरवल ऑफ 2 पाई. इसमें कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं? लेट्स थिंक अबाउट दैट. दिस इज 1 साइकिल, एक साइकिल हो गया, another cycle and another cycle. 3 cycles आपके कंप्लीट हो रहे हैं. So the value of B therefore should be 3. That's one way of thinking about this. Another way of thinking about that is कि आप देखें इस नए ग्राफ का पीरियड क्या है. एक साइकिल कंप्लीट होता है इस इंटरवल में. अब ये पीरियड कितना है? Well, that's slightly hard to figure out because यहाँ पे लेबल नहीं किया हुआ उसने. But you can probably guess in the sense कि total आपकी horizontal distance कितना cover हो रहा है? 2 pi, right? We know that is 2 pi. कितने cycles complete हो रहे हैं? 3 cycles. तो एक cycle कितने में complete होएगा? एक cycle complete होगा 2 pi over 3 में. तो new period is basically 2 pi over 3. Right side पे क्या आ रहा है? 2 pi over B. तो B की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? वो 3 हो जानी चाहिए. We can write that value here. We can say the value of B is therefore 3. These are the values that we were looking for in the first question there. Okay, I hope that makes sense. That was the first one from this paper. Let's move on to the next one. Question number 2. Okay, now it says, on the axis, draw the graph of this function y equals modulus of 3x squared plus 13x minus 10, stating the coordinates of the points where the graph meets the axes. तो आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है और आपको ये शो करना है कि कौन से पॉइंट्स पे ये ग्राफ x एक्सिस को कट करता है और y एक्सिस को कट करता है. दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. नाउ हाउ डू यू थिंक अबाउट स्केचिंग दिस फंक्शन? आपने करना सिर्फ ये है, जो अंदर वाला फंक्शन है ना, इसको स्केच कर लें और फिर जो उसके x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट आ रहा होगा उसको रिफ्लेक्ट कर दें x एक्सिस के अंदर और आप देख लें वो ऊपर कहाँ पे चला जाएगा. Now, how do you draw the graphs of quadratic functions? ये हम कैसे draw करते हैं quadratic functions के graphs? अब देखिए उसने एक्सिस शो करने के लिए कहा है तो आपको x इंटरसेप्ट्स भी निकालने होंगे, इसके y इंटरसेप्ट्स भी निकालने होंगे. वो हम पहले फिगर आउट कर लेते हैं इसके x और y इंटरसेप्ट्स क्या होंगे. So this is what the function is right now. 3x square plus 13x minus 10 का मॉडुलस. x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम y की वैल्यू 0 इनपुट कर देंगे. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट साइड पे 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10. अच्छा, हम यहाँ पे प्लस माइनस लगा सकते हैं किसी भी एक साइड के ऊपर, बट रिमेंबर प्लस माइनस 0 तो बेसिकली आपका 0 ही होगा. इट डज नॉट रियली मैटर. तो आपको सिर्फ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करनी है. उससे क्या होएगा, आपको इसके x इंटरसेप्ट मिल जाएंगे. Let's solve this quadratic equation. Can we factorize this? 30 आ रहा है, 3 और 10 को मल्टीप्लाई करके तो 15 और 2 यूज कर सकते हैं. This is going to become 3x squared plus 15x minus 2x minus 10 equals 0. We get two factors from this. One is 3x minus 2 and the other is going to be x plus 5. These are the two factors that we get, which means x is either equal to 2 over 3 or x is equal to minus 5. These are the two x-intercepts that we have for this graph, minus 5 and 2 over 3. Let's mark these points here. अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा accuracy नहीं चाहिए होती है, but it should be roughly accurate. minus 5 आप left पे यहाँ पे कहीं mark कर दें, ठीक है. And then 2 over 3, ये 1 से छोटा होएगा, तो आप देखें right side पे थोड़ा सा इसके करीब यहाँ पे आप mark कर दें 2 over 3. These are 2 points that you have. All right. Now think about this. This is a quadratic function. X square का coefficient क्या है? It's positive. X square का coefficient positive है तो ये U-shaped graph होएगा, right?
So the graph should look something like this. आप यहाँ पे इस तरह से एक स्केच बना सकते हैं. Remember इसका जो टर्निंग पॉइंट होगा ना सिमेट्रिकल होती है, बिल्कुल मिडिल में आ रहा होगा. तो -5/2 और 2/3 का हम इसका ये भी निकाल लेते हैं. तो ये किस जगह पर आ रहा होगा, इसका मिड पॉइंट निकाल लें. टर्निंग पॉइंट बिल्कुल मिडिल में होगा ना, जो दो एक्स इंटरसेप्ट्स होते हैं उसके बिल्कुल सेंटर में टर्निंग पॉइंट होता है. इनका अगर आप मिड पॉइंट निकालें, लेट मी जस्ट डू दैट ऑन माय कैलकुलेटर. -5 + 2/3 और उसको 2 से डिवाइड कर दें तो मेरे पास आ रहे -2.166. तो फिर यहाँ पे जाके मेरे पास इसका टर्निंग पॉइंट आ रहा होगा. सो आई कैन ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल an intermediate sketch just to understand the situation कि जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक ग्राफ होता है ना वो इस तरह का कुछ लगता है. It would have been something like this. ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ होता वो. लेकिन अब ये एक मॉडुलस फंक्शन है. मॉडुलस फंक्शन है, पूरे के बाहर मॉडुलस लगा हुआ है. इसका मतलब ये है जो नीचे वाला पार्ट है ग्राफ का वो रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ जाएगा. राइट, इस पूरे के बाहर मॉडुलस लगा हुआ है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता इस फंक्शन का रिजल्ट. मॉडुलस की वजह से जो नीचे वाला पार्ट है वो रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ जाएगा. तो ये आपके एक तरह से वर्टिसेस बन रहे होंगे, इनसे आपका ग्राफ रिफ्लेक्ट होके इस तरह से ऊपर आ जाएगा. एंड दिस इज व्हाट द ग्राफ वुड लुक लाइक. आप नीचे वाला पार्ट पे इरेज कर दें या आप डायरेक्टली वो बना दें, वो भी आप कर सकते हैं. लेकिन आप पेंसिल से कर रहे हो, अगर आपने नीचे वाला ये ड्रॉ किया है तो आप नीचे वाला बाद में इरेज कर देंगे और आपके पास ये फाइनल ग्राफ बन जाएगा. बट दिस इज नॉट डन येट. शेप ये बन रही होगी. ठीक है, शेप ये बन गई और आपने ये एक्स इंटरसेप्ट इसके शो कर दिया. यू ऑल्सो हैव टू शो द वाई इंटरसेप्ट. रिमेंबर, वो आपने नहीं बोला, उसने कहा एक्सिस आपको रिप्रेजेंट करने हैं, जो एक्स और वाई इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करने हैं. व्हाट अबाउट द वाई इंटरसेप्ट? क्वाड्रेटिक फंक्शंस में जो वाई इंटरसेप्ट होता है दैट इज दिस कांस्टेंट टर्म दैट यू हैव, राइट? बिकॉज एक्स की वैल्यू 0 इनपुट करते हैं इसके अंदर तो आपके पास ये -10 बच जाता है. लेकिन ओरिजिनल फंक्शन में -10 होता है वो. जब ये रिफ्लेक्ट होके ऊपर चला गया तो आपका ये पॉइंट किधर चला जाएगा? दिस पॉइंट हियर इज गोइंग टू बी +10. तो ये आप यहाँ पे मार्क कर दोगे. दिस इज व्हाट द ग्राफ वुड लुक लाइक इन दिस केस. ठीक है, तो थोड़ी सी यहाँ पे सही कर दें इस डायरेक्शन के अंदर. इट्स गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस. ये आपका ग्राफ होएगा इस फंक्शन का. ठीक है, होप दैट मेक्स सेंस. तो आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन का सोचा, नीचे वाले पार्ट को रिफ्लेक्ट करके आपने ऊपर कर दिया. ऑलराइट. अच्छा, ये मिनिमम पॉइंट जो टर्निंग पॉइंट है वो शो करना जरूरी नहीं है, लेकिन आपका ग्राफ सिमेट्रिकल होना चाहिए. दैट इज इंपॉर्टेंट. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट नाउ. इट सेज फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट k such that the equation k equals modulus of this has exactly two distinct roots. Now this is the part that is important that I particularly wanted to do for this question. इस वजह से मैंने ये चूज किया था. सेकंड पार्ट देखें. We need to set the values of k such that this equation, तो वो जो ऊपर आपका वो मॉडुलस वाला फंक्शन है, जब वो k के इक्वल होता है, इस इक्वेशन के कितने होने चाहिए रूट्स? एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए. ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम भी नहीं हो सकते. एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए. अब इसका हम कैसे सोचेंगे? आपके पास एक तरह से ये दो फंक्शंस हैं. एक फंक्शन लेफ्ट पर है y इक्वल्स k. ये आपको नहीं पता अभी क्या है, बट यू नो इट्स गोइंग टू बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस. कहां पर है k की वैल्यू क्या है? वी डू नॉट नो दैट येट. और ये वाला फंक्शन आपने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है. y इक्वल्स मॉडुलस ऑफ 3x स्क्वायर्ड प्लस 13x माइनस 10. ये आपने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है. अब ये दूसरा ग्राफ आप कहां पे ड्रॉ करोगे इधर कि आपके एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हो? थिंक अबाउट दैट. ग्राफ पे देखें, अगर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे हो इधर, कितने उसके सॉल्यूशंस होंगे? कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है. अच्छा, अगर यहाँ पे हो तो कितने सॉल्यूशंस हैं? इस पे तो 4 सॉल्यूशंस बन रहे हैं, राइट? 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बन रहे हैं.
अगर थोड़ा सा ऊपर जाए हम टर्निंग पॉइंट के पास, तो इधर टर्निंग पॉइंट पे टच करें और 2 पॉइंट्स पे और टच करें, तो ये 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बनते हैं। अगर टर्निंग पॉइंट से हम ऊपर होते हैं, तो ऊपर वाले रीजन में देखें आपके पास 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलते हैं। ऊपर वाले रीजन में 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं। तो बेसिकली एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि ये जो भी टर्निंग पॉइंट है, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है, सो दिस टर्निंग पॉइंट इज इंपॉर्टेंट नाउ। ये टर्निंग पॉइंट आपको फिगर आउट करना है, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है उसके आपको ऊपर ऊपर रहना है, फिर आपके 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस ग्राफ का इस फंक्शन का टर्निंग पॉइंट कैसे निकालें? लेट्स से हमारा फंक्शन ये क्वाड्रेटिक फंक्शन इस तरह से होता है 3x² + 13x - 10। क्वाड्रेटिक फंक्शंस के टर्निंग पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएशन करके कर सकते हैं, स्क्वायर कंप्लीट करके कर सकते हैं, एक और मेथड होता है x = -b/2a, उससे भी कर सकते हैं। लेट्स से वी यूज दिस वन, -b/2a, b क्या है 13, so that's -13 divided by 2 times a is 3 here। ये हमने ऊपर भी वैसे फाइंड किया था, बट अगर हम डायरेक्टली करना चाहें इस तरह से कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू गिव यू सम वैल्यू -13/6। -13/6 यही ये वैल्यू आ रही थी -2.166। व्हाट अबाउट द कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट? ये आप वापस इक्वेशन में इंपुट करें, ये वैल्यू कैलकुलेटर में डालें, 3 × -13/6 का होल स्क्वायर प्लस 13 into -13/6। ये आपको वर्किंग शो करनी है, उसके बगैर मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके 4 मार्क्स हैं, यू हैव टू शो दिस वर्किंग। व्हाट अबाउट द y कोऑर्डिनेट दैट वी गेट फ्रॉम दिस? 3 into -13/6 का होल स्क्वायर plus 13 into -13/6 minus 10. This is giving me -289/12। -289/12। तो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन था ना ओरिजिनल, जो इस तरह से नीचे को आ रहा था, उसका टर्निंग पॉइंट जो था that had a y coordinate of -289/12। लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट होके ऊपर चला गया, तो ये +289/12 ये पॉइंट बन जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी हियर 289/12। दैट पॉइंट दैट वी हैव देयर as the y coordinate of the turning point is 289/12। तो अब आपका ये जो दूसरा ग्राफ है y = k, तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है कि 2 रूट्स हो, टर्निंग पॉइंट के ऊपर हो सकते हैं सिर्फ। टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए हैं, -13/6 एंड 289/12। तो इसका y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, जो k की वैल्यू है, तो यहाँ पे k की वैल्यू हमारे पास है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 289/12। k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 289/12 से ऊपर होनी चाहिए। ये दूसरा हॉरिजॉन्टल ग्राफ है हमारे पास, ये 289/12 के लेवल से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं आ सकता उससे, अदरवाइज उसके 2 से ज्यादा रूट्स हो जाएंगे। बट दैट्स जस्ट वन पॉसिबिलिटी। इफ यू आर केयरफुल हियर, यू वुड नोटिस, अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ये बनाएं जो एक्स एक्सिस पे आ रही हो, तो ये सिर्फ लाइन इन 2 पॉइंट्स को टच करती है, राइट? -5 और 2/3 सिर्फ उन 2 पॉइंट्स को टच कर रही है, तो यहाँ पे भी आपके पास 2 रूट्स मिल रहे हैं आपको। तो k की वैल्यू की एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो y = 0 लाइन हो जाए, जो x एक्सिस वाली लाइन होती है। इस लाइन पे भी आपके 2 रूट्स ही बनते हैं, तो आपको 2 डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए ना। सो इसकी एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो हो गया कि k की वैल्यू 289/12 से बड़ी हो, but there's another possibility, and that other possibility is that k is equal to 0। Don't forget that, because यहाँ पे आपको डायग्राम पे देखें, वो भी एक possibility नजर आ रही है। ठीक है, so there are 2 possible sets of sets of answers that we have for k here. K could either be greater than 289/12 or k could be equal to 0. All right, that was question number 2 from this paper. Let's move on.
Okay, the next one that I want to do from this paper is question number 4. Let's have a look at that. Okay, so we want to solve this equation. This is a trigonometric equation that we want to solve. 3 sine of 2x plus pi over 4 equals square root of 3 into cos of 2x plus pi over 4. We need to solve this equation for x between 0 and pi. How do you do that? यहाँ पे sin भी आ रहा है और cos भी आ रहा है. दो functions के साथ तो हम deal नहीं कर सकते. हमें इसको एक function में convert करना है. Now, the good thing here is that we have the same angle in both of them. दोनों के अंदर 2x plus pi over 4 आ रहा है. Okay? तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम इस cos को जाके यहाँ पे divide कर दें, ये tan में convert हो सकता है और इस 3 को हम साइड पे ले जाते हैं. So what we can do is we can write this like this. We can say sine of 2x plus pi over 4. Let's bring that cos term here to the left side and it becomes sine over cos like this. On the other side, if we take this 3 to the other side, it becomes square root of 3 over 3. Now, sine over cos, what does that become? That becomes tan. So we get tan of 2x plus pi over 4. That equals square root of 3 over 3. This is the equation that we can convert it to. अब इसको solve करना है. X के interval उसने क्या दिया हुआ है? उसने कहा x is between 0 and pi. But now the problem is the angle is not x. Angle is this whole thing. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस interval को adjust करना पड़ेगा. Now you could do it directly if you want, or it's often easier to do this using a substitution. ये जो अंदर वाला part है इसको किसी और letter से denote कर दें. Let's say let a equals 2x plus pi over 4 or any other letter that you want to use. So ये equation convert हो सकती है इस तरह से. We can say tan of a equals square root of 3 over 3. And now that's something easier to solve. लेकिन आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है? Interval को भी adjust करना पड़ता है. पहले आप x को solve कर रहे थे, अब आप एक ही terms में solve कर रहे हो, तो a का interval क्या होएगा? Let's figure that out. Input 0 in this, x की value 0 input करें इसके अंदर, a की corresponding value क्या आती है? 2 into 0 plus pi over 4. That's going to give you pi over 4. So a की lower limit यहाँ पे क्या बनती है? Pi over 4. pi यहाँ पे input कर दें, तो आपके पास क्या आएगा? अगर हम pi input करते हैं, जो x की upper limit है, x की upper limit से आपको क्या value मिलती है? 2 pi plus pi over 4. And that is going to give you 9 pi over 4. तो a का जो interval बना आपके पास, that is from pi over 4 to 9 pi over 4. All right. तो जब आप इसको quadrant से solve कर रहे होंगे, आपको इस interval के अंदर सारी values देखनी है. Now, इसके बाद you just apply the standard process, find the basic angle. Let's find the basic angle. We say tan alpha equals square root of 3 over 3. ये आप calculator से देख लें. That's okay. Your calculator should give you an exact answer for this because this is a standard value for tan. आप ने कैलकुलेटर को रेडियन मोड में रखना है. बी केयरफुल अबाउट दैट. अगर आपको याद है तो आप ये वैल्यू डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. दिस इज एक्चुअली पाई ओवर 6. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 3 over 3 या फिर दिस इज द सेम एज 1 over स्क्वायर रूट ऑफ 3. ये पाई ओवर 6 के ऊपर tan की वैल्यू होती है. सो द बेसिक एंगल दैट वी गेट फ्रॉम दिस इज पाई ओवर 6. नाउ वी थिंक ऑफ क्वाड्रेंट्स. क्वाड्रेंट्स का सोचते हैं. Tan is positive. Tan positive कहाँ पर होता है? It could either be in the first quadrant or the third quadrant. These are the two possibilities that we have. So your basic angle could either be here or it could be here. These are the two possibilities that we have. अब इन दोनों quadrants के अंदर आपको देखना है कौन से angles आपके interval के अंदर आते हैं. ठीक है, आपका interval देखें, positive है सिर्फ, तो आपको clockwise नहीं जाना, सिर्फ anti-clockwise ही check करना है. Let's look at the first angle that we get. Pi over 6. Is that part of the interval? Well, if you think about it, pi over 6 is a smaller number than pi over 4. अब इसको decimal में convert करके भी check कर सकते हैं. Pi over 6 भी decimals में कर लें, pi over 4 भी decimals में कर लें. And you would figure out that pi over 6 is smaller. इसका मतलब ये range में नहीं आ रहा आपकी. This is not a possible answer. This is outside the range. Pi over 6 is not possible. तो a की value pi over 6 नहीं हो सकती, आपने नहीं लेनी है. Okay, so what do we do then? We go further and we reach this third quadrant. Third quadrant में जो value आएगी वो of course क्या आपको काफी clear है. Third quadrant वाली value interval के अंदर आ रही होगी. तो एक possible value of a आपके पास यहाँ से क्या आ जाती है? You say a is equal to pi plus pi over 6.
This is one possible value of a that we're getting. Okay, यहाँ तक पाई हो गया और इसमें पाई over 6 आपने ऐड कर दिया. All right, is there any other possibility? अब हम पूरा घूमते हैं, पूरा सर्कल हो गया 2 पाई, बिकॉज रिमेंबर ये मैक्सिमम लिमिट 2 पाई से ऊपर जा रही है, तो हमें सर्कल कंप्लीट करके भी देखना है क्या हमारे पास कोई और वैल्यू तो नहीं आ जाती जो इंटरवल के अंदर आ रही हो. So let's complete one full circle and then go back to this point again. What is this angle going to be? This is going to be 2 pi plus pi over 6. जब पूरा घूम के आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा था पहले, पाई प्लस पाई ओवर 6. पूरा सर्कल घूम के वापस उस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल पे गए तो वो बन रहा है 2 पाई प्लस पाई ओवर 6. What does this give you? That is 13 pi over 6. ये आपको अब चेक करना पड़ेगा कि ये 9 pi over 4 से बड़ा या छोटा है. Again, if you are confused, which you would be in this case because it's not very obvious, आप इसको decimals में कर लें या LCM लेके compare कर लें. That's your choice. For example, ये अगर LCM लेंगे 6 और 4 का LCM क्या होगा 12. 13 pi over 6 is the same as 26 pi over 12. और ये क्या बनता है? This is 27 pi over 12. कौन सा बड़ा है? 27 pi over 12 is bigger. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है 26 pi over 12, this does fall in that interval. Remember, ये आपका इंटरवल है pi over 4 से 9 pi over 4 तक. 26 pi over 12 is inside this interval. तो ये आप कंसिडर करोगे. So this is another possible answer that we get therefore. All right, तो ये आप डेसिमल्स में चेक करके भी कर सकते हो चेक के वो आपका सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक है, तो ये हम करते हैं. ये आपका इंटरवल में आ रहा है, ये हमने फिगर आउट कर लिया. हम क्या कहेंगे, another possible value of a for a that we're getting here is 2 pi plus pi over 6. This is another possible value for a that we're getting. इससे आगे अगर आप पूरा सर्कल घूम के वापस यहाँ पर आओगे थर्ड क्वाड्रेंट वाले एंगल पे, वो रेंज से बाहर चला जाएगा, तो you don't have to consider that क्योंकि आप ऑलरेडी इसके काफी क्लोज हो. नेक्स्ट वाला उससे बाहर चला जाएगा. That's pretty obvious. आप चेक करना चाहें तो कर लें. These are the two possible solutions that we're getting. लेकिन ये तो a के वैल्यूज हैं. हम फाइंड क्या कर रहे थे, हम फाइंड तो x कर रहे थे. अब ये सब्स्टिट्यूशन वापस इनपुट कर दें और इसको सॉल्व कर लें. ठीक है, a की जगह पे आप क्या करें, डाल दें 2x plus pi over 4. राइट साइड पे आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे दिस इज 7 pi over 6. इसी तरह से दूसरे में भी आप वापस वो सब्स्टिट्यूशन इनपुट कर दें 2x plus pi over 4. That is equal to 2 pi plus pi. ये क्या बन जाएगा 13 pi over 6. Just solve these two equations now. Find the values of x from this. Pi over 4 वहां पे जाके माइनस हो जाएगा और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे. You'll get your final result. 7 pi divided by 6 minus pi divided by 4. ये कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं डायरेक्टली. अब minus pi divided by 4 और फिर डिवाइडेड बाय 2. x की वैल्यू मेरे पास इस इक्वेशन से आ जाती है 11 pi over 24. This is one value of x that I'm getting. Similarly, you can solve the other equation. उससे देख लें आपके पास क्या आ जाता है. Again 13 pi over 6, इसमें से माइनस करें pi over 4 और फिर 2 से डिवाइड कर दें रिजल्ट को. 13 pi divided by 6 minus pi divided by 4 divided by 2. And that is giving me 23 pi over 24. These are the two answers that we're getting. Okay, now this is one way of doing this. You might have done this another way as well. That might be quicker than this, but this is going to ensure that you do not leave any possible answer. आप कोई miss ना कर दो कोई. Otherwise जो बाकी methods है ना जो थोड़ा से जल्दी हो जाते हैं, उससे कभी-कभी ये होता है कि आप confuse हो जाते हैं और आप कोई possible solution आप छोड़ देते हैं, वो उससे आपका miss हो जाता है. So I would recommend that you do it this way, and that will ensure कि जब आपने interval सही तरह से adjust किया है, आपका कोई possible answer miss नहीं हो रहा. All right, let's move on. That was question number 4 from this paper. The next one is question number 9 from this paper. That's a relatively more difficult one. Let's start with this one. All right, so we have to show first of all that this expression on the left side is equal to this expression on the right side. या आपने equal show करने हैं. आप क्या कर सकते हैं, LCM ले लें. सिर्फ ये जो लेफ्ट साइड पे 3 फ्रैक्शंस हैं, इनके LCM लेके आप प्रूव कर दें कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं. Let's do that. How do you take LCM? Now LCM में आप लोगों को मैथ में एक बहुत जो है वो गलत आदत पड़ी होती है कि आप बस डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. Please don't do that.
एलसीएम लेने का प्रॉपर तरीका क्या होता है कि हर जो फैक्टर होता है उसकी सिर्फ आप हाईएस्ट पावर लेते हो, ओके, मल्टीप्लाई नहीं कर देना इनको बस आपस में। यस, वो सिंप्लीफिकेशन के लिए दैट वर्क्स, बट एलसीएम इस तरह से नहीं लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए आप क्या करते हो, 2x+1 जो है, ये देखें इसकी एक पावर क्या है, 1 है। 2x+1 की दूसरी पावर यहाँ पे क्या आ रही है, 2 आ रही है। यू जस्ट टेक द हाईएस्ट पावर, एंड द हाईएस्ट पावर फॉर 2x+1 हियर इज पावर 2। वो सिर्फ आपने कंसिडर करनी है। अच्छा, 4x-1 की तो एक ही पावर आ रही है, दैट्स जस्ट 4x-1 पावर 1, तो उसको आप एक ही दफा यहाँ पे ले रहे हो क्या, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली डिनोमिनेटर में आपके पास ये आना चाहिए। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, what you can do is you can multiply, you can think like this कि आप इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दें हर फ्रैक्शन के साथ। फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें क्या होएगा, 4x+1 होल स्क्वायर इंटू 4x-1। इसको आपने फर्स्ट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, एक पावर 2x+1 की कैंसिल हो जाएगी, एंड what are you going to be left with in the first term, just 2x+1 and then 4x-1, that's the first term. अच्छा, then you have a negative sign, okay, so you have a minus sign here। अब बाकी सब कुछ आपने आगे ब्रैकेट्स में रखना है, वरना आपके केयरलेस एरर्स हो रहे होंगे। अब इसमें देखें, तो आपने फिर से उसी तरह सोचना है, ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड फ्रैक्शन के साथ, ये पूरा का पूरा ये तो कैंसिल हो गया, यू जस्ट लेफ्ट विद 4x-1। अब 4x-1 आपने ब्रैकेट में लिखना है 4x-1 लाइक दिस, ऑलराइट। सिमिलरली ये जो पूरी एक्सप्रेशन है, अब आपने क्या करना है, थर्ड फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई की, उसमें क्या आएगा, 4x-1 और 4x-1 कैंसिल हो जाएंगे। न्यूमरेटर में आपके पास क्या बचेगा, +4 मल्टीप्लाइड बाय 2x+1 होल स्क्वायर्ड। ये आपके पास एक्सप्रेशन आती है व्हेन यू टेक एलसीएम। ठीक हो गया। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और आपने प्रूव कर देना है कि ये राइट साइड आ सकती है, राइट साइड बन जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड दैट वी आर टेकिंग। इसको सिंप्लीफाई कर ले, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी आपको। ये 2x into 4x that gives you 8x squared, 2x into -1 that's -2x plus 4x minus 1, and you have -4x plus 1, right? और फिर आपके पास आता है 4 into, ये अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर दैट इज 4x squared plus 2x into 2 into 1 that's 4x plus 1. In the denominator, you have that same expression, which is 2x plus 1 whole squared into 4x minus 1. Let's simplify this and see what this gives us. अब देखें, आपने स्टेप्स स्किप नहीं करना। जब भी उसने शो करने के लिए कहा होता है ना, आपके सारे वर्किंग के मार्क्स होते हैं, डोंट स्किप एनी स्टेप हियर, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपका मार्क्स कट जाएंगे, बिकॉज उसने फाइनल आंसर दिया हुआ है आपको, तो आपने स्टेप शो करने हैं, ठीक है। तो एक स्टेप आप और शो कर दें इसके बाद, कि आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, 8x square minus 2x plus 4x minus 1 minus 4x plus 1। थोड़ा सा बाहर वाले सिंप्लीफाई कर सकते हैं if you want already, but let's just do it। ये क्या आता है हमारे पास, plus 4 into 4x that's 16x plus 4 into 1 that's 4, and the denominator we have the same thing as before, which is 2x plus 1 whole squared into 4x minus 1। ऑलराइट, अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लें, देखें वो क्या देता है आपको, 8x square plus 16x square, right, that gives you 24x square, which is correct, okay। अच्छा, minus 2x plus 4x minus 4x, ये तो कैंसलेशन भी हो रही है साथ साथ, we have 16x and minus 2x, that's going to give you 14x, and then you have minus 1 and plus 1, they get cancelled, we have this constant left, which is 4, and that's exactly what we wanted। ये हमने prove कर दिया, the left hand side is equal to the right hand side। All right, so that's the first part। Let's move on to the next one now। अब next part में क्या है, it says hence find the integral of this fraction giving an answer in this form, half ln p plus q, where p and q are rational numbers। rational numbers क्या होते हैं, integer हो सकते हैं, fraction हो सकते हैं, decimals में नहीं आपने आंसर देना, just keep that in mind।
जब उसने ये फॉर्म दी हुई है, ऑल दैट मीन्स इज यू हैव टू कीप योर आंसर इन एग्जैक्ट फॉर्म. जब एग्जैक्ट फॉर्म में रखेंगे वो ऑटोमेटिकली वही फॉर्म आ जाएगी जो उसने आपसे मांगी हुई है. अब इसको करेंगे, इसको इंटीग्रेट कैसे करें. नाउ इट्स अ फ्रैक्शन, इट्स अ वियर्ड लुकिंग फ्रैक्शन. अब इसको डायरेक्टली करना तो हमारे लिए काफी मुश्किल होएगा, बट उसने कहा है hence find this integral. That means you can use the first part somehow. फर्स्ट पार्ट में उसने क्या करवाया है, यही जो फ्रैक्शन है उसने कहा है दिस इज आइडेंटिकल टू दिस एक्सप्रेशन दैट यू हैव ऑन द लेफ्ट साइड. तो आप इस इंटीग्रल की जगह क्या कर सकते हो, वो जो लेफ्ट साइड पे तीन फ्रैक्शन लिखी हुई है वो लिख सकते हो. यू कैन से दिस फ्रैक्शन इज द सेम, दिस इंटीग्रल इज द सेम एज दिस इंटीग्रल के हम उनको इसको ब्रेक कर लें तीन पार्ट्स में. हम कहें कि अच्छा एक फ्रैक्शन हमारे पास है 1/2x+1, एक हमें इसको इंटीग्रेट करना है. देखें दरम्यान में प्लस माइनस है ना, जब प्लस माइनस होते हैं तो हम उनको अलग अलग कर सकते हैं. तो फर्स्ट फ्रैक्शन को अलग से लिख लें 1/2x+1, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. Then you have the next one minus 1/2x+1 whole squared. Okay, let's write that here as well. Second आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1/2x+1 whole squared. This is the second thing that you have to integrate. Again, the limits are the same. And then the third one is 4/4x minus 1. Okay, so plus integral of 4/4x minus 1. इनको आप अलग अलग इंटीग्रेट कर लें, लिमिट्स इनपुट कर दें, देखें आपके पास क्या होता है. Okay, now how do we do this? These are three fractions that we have. How do we integrate these fractions? 1/2x+1. Now you might think initially कि हम 2x+1 को ऊपर ले जाते हैं, राइट? 2x+1 को ऊपर ले जाएं. अगर आप 2x+1 को ऊपर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा. और फिर आप सोचेंगे इसको इंटीग्रेट कैसे करें, और फिर आप शायद सोचेंगे इस पर पावर रूल लगा दें. बट अगर आप इसमें पावर रूल लगाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आप पावर में 1 ऐड करेंगे, -1 + 1 क्या होता है, 0 हो जाता है, और फिर आपको 0 से डिवाइड करना पड़ेगा एंड यू वुड रियलाइज देयर समथिंग रॉन्ग, राइट? तो जब -1 पावर होती है ना, -1 पावर होती है, तो पावर रूल नहीं लग सकता उसके ऊपर. तो पावर रूल नहीं लग सकता, तो हम क्या करना पड़ता है इस तरह के केसेस के अंदर, ये आपकी लॉग वाली फॉर्म है, ln वाली फॉर्म है, इस पर पावर रूल नहीं लग सकता. Okay, so this is the log form. Log form, now again you might have done it in different ways. Log form में basically होता ये है कि आपको डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में चाहिए होता है. 2x+1 का डेरिवेटिव क्या है, 2x+1 का डेरिवेटिव is 2, right? So what you can do is you can write this integral as 2/2x+1. So it becomes like this. तो 1 की जगह पे आपको 2 चाहिए था ऊपर. अब उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, you can write 1/2 outside. That's one way of doing this. You might have done it another way and that's perfectly okay as well. Just remember इस पे log वाला रूल लगना है, ln वाला रूल लगना है, ठीक है. So what I've done is I've just used this trick. अंदर में मैंने 2 लिख दिया न्यूमरेटर में, उसको बैलेंस करने के लिए बाहर 1/2 लिख दिया. Okay, तो अब क्या हुआ, ये log form बन गई. The integral of this is going to be 1/2 into ln of 2x plus 1. ऑलराइट, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अच्छा इसका इंटीग्रल क्या आएगा, ln of 2x plus 1, फिर आपने इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया है 2x plus 1 के डेरिवेटिव से, और वो 2 है, and that gives you the same result as well. That's perfectly okay. Okay, so ये फर्स्ट फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन तो ऐसे हो गई. What about the second fraction? अच्छा, ये लिमिट्स हम थोड़ी सी हटा देते हैं, बहुत क्लटर हो रहा है, एंड पे जाके लिख लेंगे. Second fraction is this one, 1/2x plus 1 whole square. अच्छा, जब -1 के अलावा कोई और पावर हो जाए ना, फिर ln रूल नहीं लगता. ये तो -2 पावर है, इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे आपको पावर रूल ही अप्लाई करना पड़ेगा. इसको आप ऐसे लग सकते हो 2x plus 1 whole raised to power -2. इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे और इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, आप इस पे सिंपली पावर रूल अप्लाई कर दें. 2x plus 1 जो अंदर वाला पार्ट है वो वैसे ही रहेगा, पावर में 1 ऐड किया, -2 plus 1, what's that? -2 plus 1 is -1. इस नई पावर से डिवाइड कर दिया, you divide by this new power and you also divide by the derivative of the part that is inside the power. जो पावर की बेस है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड भी करना है. That's the integral of the second fraction. ठीक है, ये भी हो गया. अब देखते हैं थर्ड.
अब ये थर्ड वाली तो आप देखें ये ऑलरेडी ln वाली फॉर्म है आपके पास. डिनोमिनेटर इज 4x minus 1. 4x minus 1 का डेरिवेटिव क्या है? 4. यू ऑलरेडी हैव दैट इन द न्यूमरेटर. ये पूरी फ्रैक्शन हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं. हम कह सकते हैं इसकी इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो जाएगी? ln of 4x plus 1. ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी. Another way of doing this could be, अगर आपने दूसरे तरीके से किया हुआ है, आप कहते हैं कि अच्छा 4 को उठा के बाहर लिख लेते हैं. हम 4 को उठा के बाहर लिखा, फिर अंदर वाले पे आपने लॉग लगा दिया, और फिर आपने कहा कि अच्छा ये 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, जो अंदर वाला पार्ट है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे. आपके पास इवेंचुअली यही चीज बन जाएगी, विच एवर वे यू डू. ओके, अच्छा ये 4x minus 1 था, सॉरी मैंने 4x plus 1 लिख दिया यहाँ पे. दिस शुड बी -1 here. Alright, but everything else remains the same. This is what you get when you integrate it. ये आपकी थर्ड इंटीग्रेशन होगी. ठीक हो गया? Once you're done with this, now let's just simplify this a bit. और फिर हम क्या करेंगे? लिमिट्स इनपुट कर देंगे इसके अंदर. ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये बन गया 1/2 into ln of 2x plus 1. ये -1 है और ये 2 है और ये बाहर -1 है. माइनस माइनस तो प्लस हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है और ये पावर -1 है. वी कैन राइट दिस थिंग एज 1/2 into 2x plus 1. ऑलराइट, साइन बाहर चेंज हो गया, माइनस की जगह प्लस हो गया, और फिर हमारे पास क्या आ रहा है? प्लस ln of 4x minus 1. अब हम क्या करेंगे? इसमें लिमिट्स इनपुट कर देंगे. व्हाट आर द लिमिट्स दैट वी हैव? द लिमिट्स आर फ्रॉम 1/2 to 1. ये लिमिट्स इस पूरे एक्सप्रेशन में डाल दें. एक दफा 1 इनपुट करें, एक दफा 1/2 इनपुट करें. नाउ यू हैव टू शो दिस वर्किंग शो करना जरूरी होगा, उसके बगैर आप नहीं कर सकते. ठीक है, लेट्स इनपुट दीज वैल्यूज. एक दफा 1 इनपुट करते हैं पहले. लेट्स सी व्हाट वी गेट फ्रॉम दैट. 1/2 into ln of 2 into 1 plus 1. All right, plus 1/2 into 2 into 1 plus 1. And then you have plus ln of 4 into 1 minus 1. ये आपके पास आ गया जब आपने 1 इनपुट किया. Subtract from this the case when you input 1/2. इसमें से माइनस कर दें. You can do that in a new line if you don't have enough space, and that's perfectly okay. Minus the case when you input 1/2. So you have 1/2 into ln of 2 into 1/2 plus 1 plus 1/2 into 2 into 1/2 plus 1. Then you have plus ln of 2 into 1/2, sorry, 4 into 1/2 minus 1. ये वर्किंग शो करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने एग्जैक्ट आंसर मांगा हुआ है आपसे एंड पे. तो वर्किंग सारी शो करनी है. इट्स अ 7 mark question, so you can afford to spend some time on this. Now you can sort of simplify this. 1/2 into ln 3. Then you have the second fraction. ये क्या बनेगा? 1/2 into 3. That's going to be 1/6. And you have ln of 4 minus 1, which is ln of 3. ये first bracket आ गई. इसमें से माइनस कर दिया दूसरा वाला केस. वो क्या आएगा? 1/2 into ln of 2 and 2 get cancelled. 1 plus 1, so that's ln of 2. Similarly here, these 2 and 2 get cancelled. We have 1 plus 1 here inside, and that becomes 2. 2 into 2, that's 4. So you have 1/4 here. Then you have plus ln of 2 minus 1, which is just ln of 1, which is 0. यहाँ पे लिख दें, इसके बाद simplify कर लें इसको. Let's simplify this and see what that gives us. 1/2 ln 3. और in fact 1/2 ln 3 और ये ln 3 है, तो ये add होके क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3/2 ln 3 plus 1/6 minus 1/2 ln 2 minus 1/4. So, ln 1 तो 0 ही होता है, so that's just -0. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा.
अब कैसे करें? आपको क्या फॉर्म चाहिए? जो फॉर्म आपको चाहिए उसमें क्या है, एक एलन टर्म है सर, सिर्फ एक एलन टर्म है, मल्टीपल एलन टर्म्स नहीं आ सकती आपके आंसर में, और एक कांस्टेंट टर्म है। तो अब हमें क्या करना है, कोई रूल अप्लाई करके, कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन रूल अप्लाई करके आपको इनको लॉग टर्म्स को इकट्ठे करना है, एक सिंगल टर्म बनाना है। हाउ कैन वी डू दैट? अब जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन लॉ या डिवीजन लॉ अप्लाई करना होता है ना, जब बाहर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, इट हैज टू बी वन और -1, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको पहले इन नंबर्स को पावर में लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, सो यू कैन राइट दिस एज ln ऑफ 3 raised to power 3/2, ओके, एंड माइनस ln ऑफ 2 raised to power 1/2। ये आपने ln वाली टर्म्स को इकट्ठे रख लिया, इस टर्म को और इस टर्म को। ठीक है, यूएनएन को इकट्ठे लिख लिया अभी। देन 1/6 माइनस 1/4, ये तो आप इवेल्युएट कर लें, सीधा कैलकुलेटर में डालें, देखिए आपको क्या मिलता है, 1/6 माइनस 1/4, दैट इज -1/12। तो बाकी कांस्टेंट तो मेरे पास आ रहा है -1/12। ठीक है, वो तो अलग से आ रहा है। अब क्या करें, अब इस पर डिविजन रूल अप्लाई कर सकते हैं, राइट, डिविजन लॉ अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स अप्लाई द डिविजन लॉ, बिकॉज माइनस है ना, लॉग के बाहर माइनस है, एलएन के लॉग के बाहर माइनस है, तो अंदर आके क्या होएगा, लॉग के डिवाइड हो जाएगा। Division inside log is subtraction outside log, and also the other way around. Subtraction outside log is division inside log. So this can be written as ln of 3 raised to power 3/2 divided by 2 raised to power 1/2 minus 1/12. Now we have to simplify this thing and see what that gives us. 3 raised to power 3/2. Let's see what that is. अच्छा, इसमें क्या है, सॉरी, ऊपर जो हमें चाहिए फॉर्म, उसमें 1/2 हमें बाहर ही चाहिए। ठीक है, ओके, 1/2 बाहर चाहिए, तो हम इसको एक तरह से ये कर सकते हैं, हम 1/2 पावर बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, सो अंदर हमारे पास ये रह सकता है, we can write it like this, we can say ln of 3q over 2, और जो 1/2 पावर है, जो डिनोमिनेटर वाली पावर है, उसको उठा के बाहर लिख लेते हैं, राइट। फिर हम पावर लॉ लगा के इस 1/2 को बाहर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट बिकम्स 1/2 into ln 3 cube is 27, so it becomes ln of 27/2 minus 1/12, and that is what we had to do. This is the form that was required. इसमें ऊपर लिखा हुआ था 1/2 into ln of p plus q. This was the form that was required. इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया। अगर उसने पी और क्यू की वैल्यूज पूछी होती तो आप क्या लिखते हैं, पी की जगह पे हमारे पास आ रहे हैं 27/12, और क्यू की जगह पे हमारे पास आ रहे हैं -1/12। ऑलराइट, लेकिन उसने नहीं पूछी, you can say this is just your final answer. That is what we were looking for. Okay, that's question number 9 from this paper. I hope that makes sense. Let's move on to the next one. Question number 10 from this paper. This is the last one that we're going to do from this paper. Let's have a look at this. It says the first 3 terms of an AP are LGX raised to power 5, LGX raised to power 9, where x is greater than 0. So this is an AP. We need to show that sum of n terms to this progression can be written like this, where p is an integer. Okay, sum of n terms, आपने उसका formula निकालना है. What's the sum of n terms of an AP? It's something like this, Sn equals half. दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक में तो आपको लास्ट टर्म चाहिए होती है, दूसरे में आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म और डिफरेंस चाहिए होते हैं, वो वाला यूज कर लेते हैं, हाफ n into 2a plus n minus 1 times the difference. This is what the sum formula for an AP looks like. So what do we need for this? We need the first term. So if it's an AP, what we need is the first term, a, that is LGX here. What about the difference? Difference के लिए हम कोई भी दो consecutive terms का difference निकाल सकते हैं. इन दोनों का difference ले लें, इन दोनों का difference ले लें. They should both give you the same thing. LGX raised to power 5. I'm subtracting the first term from the second term, so it becomes LGX raised to power 5 minus LGX. We can simplify this a bit.
ये एल लॉग के बाहर माइनस है, ये अंदर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सो इट कैन बी रिटन एज LGX raised to power 5 over x, which is LGX raised to power 4. So that's what the difference is supposed to be here. ठीक हो गया? We have the first term, we have the difference. All you have to do now is input these values in this formula and see what we get from that. आपको sum to n terms वाला formula चाहिए ना? Let's do that. उसके अंदर input कर देते हैं. Half n into 2 times a, so that's 2 into LGX plus n minus 1 times the difference. The difference is LGX raised to power 4. ये आपके पास फॉर्मूला आ गया. अब आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. उसने क्या किया हुआ है, उसने LGX को कॉमन लिया हुआ है और उसके अलावा कोई आपके पास LGX नहीं आ रहा वहां पे. ओके, ठीक है. तो x पावर 4 नहीं चाहिए आपको, x की पावर 1 ही होनी चाहिए. What we can do for that is we can say let's take this 4 here ताकि पावर में सिर्फ 4 खत्म हो जाए. So this becomes half n into 2 LGX plus 4 into n minus 1 into LGX. Right? पावर लॉ अप्लाई करके मैंने इस 4 को नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ. And now what I can do is I can take 2 common and I can also take LGX common, right? LGX भी उसने common लिया हुआ है. 2 भी common ले लेते हैं, उससे ये बाहर वाला 2 cancel हो जाएगा और LGX भी common ले लेते हैं. Right? 2 LGX can be taken common from this now. Let's do that. We get 2 LGX multiplied by n over 2. And inside the bracket, we're just left with 1 plus 2 into n minus 1 now. अच्छा, बाहर देखें अब क्या हो रहा है. बाहर ये हो रहा है कि 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं और हमारे पास क्या बचा है, हमें n बाहर चाहिए और LGX भी बाहर चाहिए. दैट्स ओके. सो n into LGX ये बाहर बच गए हैं. अंदर क्या आ गया आपके पास, 1 plus 2n minus 2. इसको सिंप्लीफाई कर लें. अंदर उसने n पहले लिखा हुआ है बस ब्रैकेट के बाहर, n लेफ्ट साइड भी लिखा हुआ है, LGX बाद में लिखा हुआ है. दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऑर्डर आप जो मर्जी रख सकते हैं. तो हम भी इसी तरह लिख देते हैं, फिर n को पहले लिख दें और फिर अंदर आपके पास क्या आ रहा है, अंदर उसको चाहिए Pn minus 1. तो हमारे पास वो आ गया 2n आ रहा है, राइट? और बाहर माइनस और उसके साथ minus 1 आ रहा है. सो 2n minus 1 और बाहर LGX मल्टीप्लाई हो गया. दैट इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर. ये हमने प्रूव कर दिया. P is an integer, तो P की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, P की जगह पे हमारे पास 2 आ रहा है. If you want you can write that, but it's not necessary. उसने सिर्फ इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा हुआ था. P की वैल्यू यहाँ पे 2 आ दिया हमारे पास. This is the form that we were looking for here. ठीक हो गया. That is part A. Let's move on. Part B. It says hence find the value of n for which the sum to n terms is equal to 4950 LGX. So okay, now this is pretty straightforward. आपने sum का formula निकाल लिया. Sn is equal to this. So all you have to do now is just equate that to 4950 LGX and see what that gives you. अच्छा, अब क्या होगा, LGX cancel हो जाएंगे. What are we left with? We are left with the quadratic equation that looks like this. 2n square minus n. उस साइड से 4950 लेफ्ट पे लेकर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4950 माइनस हो जाएगा यहाँ पे. This is the quadratic equation. We can just solve this quadratic equation, but remember to show your working show करना जरूरी है. How do we do this? Can we factorize this? We'll have to figure that out. Factorization में सोचना वैसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लंबा हो जाएगा. Although हो सकता है factorize हो रहा हो, लेकिन to make it easier, save our time, we can just use the quadratic formula. Quadratic formula में values डालें सीधी. Minus into minus 1 plus minus square root of minus 1 whole squared minus 4 into 2 into minus 4950 whole divided by 2 into 2. ये देख लें आपके पास क्या आता है. So I'm getting 1 plus minus square root के अंदर we have 1 plus 4 into 2 into 4950. Inside the square root we have 39601.
divided by 4. That is going to give us two possible values for n. 1 plus square root of answer divided by 4. So I'm getting one value as 50. Let's see the other value. With a negative value in any case, but we have to write that down. Yeah, that's giving me minus 49.5. This is the second value that I'm getting. Now, of course, n is representing number of terms. So what decimals mein to ho nahi sakta. It has to be an integer. So this is not possible. We say the only possible answer is n equals 50. दूसरा answer आपने नहीं छोड़ना वहां पे. You have to clearly show कि उसको आप ignore कर रहे हैं. That's not the correct answer. All right. So this is what you do here. And that's the answer that we have for this last question. All right. Let's move on. Part C. Okay, we have another part as well. It says, given that the sum to n terms is also equal to minus 14850, find the exact value of x. Sum to n terms is also equal to this. अच्छा, अब हमें क्या करना है? All right, पहले वो LGX के terms में उसने दिया हुआ था, right? अब उसने कहा, given that the sum is also equal to this thing. अब sum उसने एक तो ये कहा है कि ये है और दूसरा उसने कहा ये है. इन दोनों को इक्वेट कर दें आपस में. 4950 LGX वो उसने पिछले पार्ट में दिया हुआ था. उसने कहा था sum to n terms ये है. ओके, अब उसने वो सम जो है वो इसके भी इक्वल है माइनस 14850 के. इन दोनों को इक्वेट करें, देखिए आपके पास x की क्या वैल्यू आती है. यहाँ से उधर जाके डिवाइड होएगा. minus 14850 divided by 4950. That's giving me minus 3 on the other side. Remember, LG की base क्या होती है? 10 होती है, right? So 10 will go to the other side and become the base of minus 3. So you can say x is equal to 10 raised to power minus 3. You need an exact value. Decimals में नहीं लिखना. इसको आप क्या लिख दोगे? 1 over 10 cube, which is 1 over 1000. This is the value of x that you have. इसको अगर आप ऐसे decimals में लिखेंगे तो exact value ही होगी. And that's perfectly okay. This is what we have from this. X equals 1 over 1000. All right, that was the last question that we have here. This was November 2022, paper 1, variant 2. Okay. Now we need to move on to the next paper, which is November 2022, paper 1, variant 3. इसके हम ये 4 questions कर रहे होंगे, 5, 10, 11, 12. These are the relatively more difficult ones, but before we start that, let's have a 30-second break just to have some energy for the next one. Okay, 5, 10, 11, 12. Yeah, ये 4 questions अब करेंगे अभी in a few seconds. Just a reminder to like the stream. If you haven't already, it helps with engagement. It helps more people find it. Subscribe to the channel. It will be extremely helpful for you in your A-levels as well. I'll be posting a lot of useful content for AdMaths in the next few days as well. Or our description में देखेंगे, you'll find a lot of useful videos that cover almost the complete syllabus for AdMaths, and also you'll find some quick revision videos, which a lot of people find extremely helpful before their exams. And you can also stay tuned for the next week or so until paper 2. We will be doing a lot more practice questions in these days as well. All right, so let's start with this next paper now. November 22, paper 1, variant 3. Let's start with question number 5 of this paper. It says a GP is such that the 15th term is equal to 1 over 8 of the 12th term. The sum to infinity is 5. We need to find the first term and the common ratio. Okay, now we have a GP. Keep that in mind. We're talking about a geometric progression now.
15th term, that means T15 is equal to 1 over 8 of the 12th term. So that's 1 over 8 of the 12th term. That is what we are given. And we're also given that the sum to infinity is equal to 5. ये दो चीजें उसने बताई हुई हैं. We need to find the first term and the common ratio. That's pretty straightforward actually. Term formula apply कर दें और infinity sum to infinity वाला formula apply कर दें. What are the formulas that you have for this? ये formula sheet में भी लिखे होते हैं. Tn is ar raised to power n minus 1. S sum to infinity is a over 1 minus r. Just input values. Just input those formulas here. A r raised to power n minus 1. T15 क्या होएगा? 15 minus 1. So that's 14 equals 1 over 8 into a raised to power r. A into r raised to power 12 minus 1, which is 11. This is the first equation that we have. In the second equation, we get a over 1 minus r. That should be equal to 5. We have these two equations. इनको simultaneously solve कर लेंगे तो a और r की values आ जाएंगी. ठीक है, so that's not that difficult. Let's do this. अच्छा पहले तो ये देखें r raised to power 11 है, इधर r raised to power 14 है. a और a वैसे कैंसिल हो रहे हैं. तो जब ये r raised to power 11 इस साइड पर आएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? r cube सर. So r cube is equal to 1 over 8. Take cube root लेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? r की वैल्यू आ जाएगी 1 over 2. So that's the ratio. You can input this in the other equation now to find the first term. A over 1 minus 1 over 2, that is equal to 5. And that gives you a over 1 over 2, that equals 5. 1 over 2 जाके right side पे multiply होएगा. 5 over 2, that is 12.5, sorry, 2.5. And that is going to be the first term that you're looking for. So we have the ratio and we have the first term. यहाँ पे आपको यही दो चीजें चाहिए थी. ठीक है. Let's move on to the next one now. Now it says, find the least number of terms needed for the sum of the GP to be greater than 4.999. Now that's the part because of which I chose this. Let's try this now. Find the least number of terms needed for the sum of the GP to be greater than 4.999. अच्छा, sum of GP का formula क्या होता है? Sum of n terms of a GP, that is a into 1 minus r raised to power n divided by 1 minus r. That's the sum formula for a GP. उसने क्या कहा है? n की value निकालें such that the sum is greater than 4.99. So Sn should be greater than 4.999. Sum वाला formula input कर दें यहाँ पे a into 1 minus r raised to power n divided by 1 minus r. That should be greater than 4.999. R और A की values input कर दें. You've already found those values in the first part, right? हमने ऊपर first part में यहाँ पे find किया. A is 2.5 and R is 0.5. ठीक है, ये दो values हमारे पास हैं first part से. Let's use those two values. Sorry, A was 2.5. So we have 2.5 into 1 minus R. R is 0.5. So that's 0.5 raised to power n divided by 1 minus 0.5. That's greater than 4.999. Denominator को जाके right side में multiply कर दें. 0.5 होगा ना, पॉजिटिव नंबर ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनइक्वालिटी साइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 0.5 मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी साइन ग्रेटर देन ही रहेगा. लेफ्ट साइड पे न्यूमरेटर में वी हैव 2.5 minus 2.5 into 0.5 raised to power n. On the right side we have 4.999 multiplied by 0.5. Let me evaluate that. That is 2.4995. Acha. What do we do now? We can take this n term to the right side, bring that to the left. So 2.5 minus this thing, ये क्या हो जाएगा? Let's evaluate that. This is giving me 0.0.
0.005. 1, 2, 3, 4. Yeah, that's greater than 2.5 into 0.5 raised to power n. What do we do now? 2.5 जाके उधर left पे divide कर दें, and that turns out to be 0.0002. That is greater than 0.5 raised to power n. What do we do at this point? We can take log on both sides now. ठीक है, दोनों sides पे log ले लें. log लेंगे दोनों sides के ऊपर. आप कोई भी log ले सकते हैं, LG ले लें, Erin ले लें, that's your choice. Let's take LG. अगर हम LG ले लेते हैं दोनों sides के ऊपर, we get LG of 0.002 here. On the right side we have LG of 0.5 raised to power n. अब n नीचे आ जाएगा, multiply हो जाएगा इसके साथ. अच्छा, अब इस पे थोड़ा सा ना ध्यान रखना है. जब भी आप log लेते हैं inequality में ना, तो थोड़ा सा मसला होता है कि कभी कभी log का रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है, और वो होता है जब आप log लेते हो 1 से छोटे नंबर्स का. 1 से छोटे नंबर्स का log लेते हैं ना, वो नेगेटिव रिजल्ट होता है, नेगेटिव आंसर मिलता है. तो फिर आपको इनइक्वालिटी साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है. तो बिफोर यू टेक एनी टर्म टू द लेफ्ट साइड और राइट साइड, आप पहले log की वैल्यू इवैल्यूएट कर लें. दैट्स गोइंग टू मेक थिंग्स सिंपलर फॉर यू. तो ये पहले इवैल्यूएट कर लेते हैं. LG of okay, where is the LG button? This calculator. Okay, LG of 0.0002. That's giving me minus 3.6989. So we can say 699 on the left side. Right side में हमारे पास क्या हो जाएगा? N into LG 0.5. Right, LG 0.5 evaluate कर लें. Let's see what that turns out to be. LG 0.5 is minus 0.301. अब देखें, ये नंबर जाके लेफ्ट साइड पे डिवाइड करना है. जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है. तो ये ग्रेटर देन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो जाएगा लेस देन. राइट पे n आ रहा है, ये नंबर जाके वहां पे डिवाइड होएगा. Let's see what that turns out to be. 3.699 divided by the answer. That is giving me 12.29. So we are getting that n should be greater than 12.29. ठीक है? This is what we are getting. N is greater than 12.29. उसने क्या पूछा था? उसने कहा है find the least number of terms needed for the sum to be greater than 4.999. अब n की क्या कंडीशन है? 12.29 से बड़ा होना चाहिए, n एक इंटीजर भी होना चाहिए. तो 12.29 से बड़ा सबसे लीस्ट इंटीजर क्या होएगा आपके पास? लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज देयरफॉर गोइंग टू बी 13. ठीक है, 12.29 से राइट पे होना चाहिए, आप बड़ी वैल्यू होनी चाहिए. तो लीस्ट इंटीजर क्या पॉसिबल हो सकता है? 13 ही हो सकता है, राइट? 12 नहीं हो सकता, बिकॉज 12 तो इस इंटरवल में आता ही नहीं है, वो इस कंडीशन को satisfy नहीं करता. The least possible value of n therefore should be equal to 13. Now, if you do it by trial and error, अगर आप चेक करते हो बस वैल्यूज इनपुट करके, अच्छा कहाँ पे जाके आपका सम 4.99 से बड़ा होता है, कितनी टर्म्स के बाद कैलकुलेटर पे आप बस चेक करते रहते हो, टर्म्स ऐड कर करके, दैट इज नॉट गोइंग टू अर्न यू फुल मार्क्स. आपको ये प्रॉपर वर्किंग के थ्रू दिखाना होगा, अदरवाइज आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे वहां से. ठीक है, so that's the least value of n that we were looking for. That's 13. Let's move on. That was question number 5 of this paper. Let's move on to the next one. This is question number 10 now. Okay, so we need to solve this equation. Square root of 2 into cos of 3x plus 1.2. That is equal to 2 sine of 3x plus 1.2, where x is in radians for x between minus 1.5 and plus 1.5. We need to solve this equation. How do we do this? Again, we've done a question that was similar to this before. एक cos आ रहा है, एक sin आ रहा है, दो functions के साथ तो हम equation को नहीं solve कर सकते, इसको एक में convert करना पड़ेगा. Angle same है, that's a good thing, right? So हम क्या कर सकते हैं? cos को जाके वहाँ पे divide कर दें, because we know sin over cos is tan, और इस number को लाके left पे divide कर दें.
तो हमारे पास क्या आता है, लेट्स फिगर दैट आउट। स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 लेफ्ट पर आ जाएगा, जब हम 2 को यहाँ पे जाके डिवाइड करेंगे राइट साइड पे, वी वुड हैव साइन ऑफ 3x plus 1.2 divided by cos of 3x plus 1.2। ठीक है, साइन ओवर कॉस जो है वो tan बन गया, so we have tan of 3x plus 1.2 that is equal to square root of 2/2। This is the equation that we end up getting। अब हम कैसे सॉल्व करें इसको? What we can do is we can use a substitution, right? We know the interval for x is from -1.5 to 1.5। उसने बताया हुआ आपको x रेडियंस में, ना भी बताया होता you should know that it is in radians because डिग्री साइन नहीं लगा हुआ। जब डिग्री साइन नहीं लगा होता तो वो रेडियंस ही होता है, डिग्रीज जब होंगे तो डिग्रीज का साइन वहां पे लगा होगा जरूर। ओके अच्छा, तो हम क्या करें इसमें? मसला ये है कि एंगल x नहीं है, एंगल इज दिस होल थिंग। इंटरवल हमें x का दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम एक सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। हम कहते हैं लेट another letter, let's say let a equals 3x plus 1.2, और इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं a की टर्म्स में। so it becomes something like this, we say this is tan of a equal to square root of 2/2। and now what about the interval for a, because हमें x का इंटरवल दिया हुआ था, अगर हम a की टर्म्स में सॉल्व करेंगे we would need an interval for a as well। -1.5 यहाँ पे इनपुट करें x की जगह पे, देखें क्या आता है, कैलकुलेटर में डालें 3 into -1.5 plus 1.2, that is giving me -3.3। Let me just confirm that again, 3 into -1.5 plus 1.2, yes, this is -3.3। lower limit a की क्या होगी, -3.3। what about the upper limit? 1.5 इनपुट कर दें प्लस 1.5, उससे देखें क्या आता है, प्लस 1.5 इनपुट करेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी इसकी 5.7। ओके सो ए की आपके पास ये लिमिट्स बन गए। अब इसको सॉल्व कर लें कंसिडरिंग दीज टू लिमिट्स, लेट्स सी व्हाट वी गेट फ्रॉम दैट। सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक एंगल फिगर आउट करेंगे। tan alpha equals square root of 2/2। let's find the basic angle। tan inverse of square root of 2 divided by 2, make sure your calculator is in radian mode। this is giving me 0.61547। आपने मिनिमम 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं अपनी वर्किंग में, अदरवाइज आपके फाइनल आंसर सही नहीं आएंगे। so 61547, so that's 6155, that's the basic angle that I'm getting। इसको आप एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं कर सकते, डेसिमल नहीं आ रहा है, ठीक है। उसने क्वेश्चन में आपको इसलिए कहा भी नहीं हुआ कि आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए। दिस इज व्हाट वी हैव, alpha equals 0.6155। what do we do now? Now we think of quadrants। tan is positive, positive कहाँ पे हो सकता है, फर्स्ट में और थर्ड में। तो या तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, योर अल्फा could either be here or here। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस। आपका इंटरवल देखें नेगेटिव साइड भी आ रही है, तो आपको नेगेटिव साइड भी चेक करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव साइड फर्स्ट ऑफ ऑल। पॉजिटिव साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज द फर्स्ट एंगल दैट आई एम गेटिंग, this is 0.6155। is that in the interval? Yes, that is in the interval। so the one possible value of a that we have from here is a equal to 0.6155। that's one possible answer। okay अच्छा, इसको x में कन्वर्ट करेंगे। अभी इस a की टर्म्स में हमारे पास एक ये पॉसिबल वैल्यू आ रही है। ऑल राइट, व्हाट एल्स? वी कैन गो थ्रू द थर्ड क्वाड्रेंट एंड गेट दिस एंगल। लेट्स सी इफ दैट इज इन रेंज। ये क्या होएगा, pi plus 0.6155, and that gives me, let me just simplify this, pi plus 0.6155, that is 3.757। ये इंटरवल के अंदर आ रहा है। we are also going to consider this is another possible value of a that we have। okay अच्छा, what else? let's go one full circle and come back to this। वो 2 पाई से बड़ा है, आपको पता है 2 पाई 5.7 से बड़ा होता है ना। 2 पाई is 6 point something,
राइट, तो वो तो रेंज से बाहर चला जाएगा, तो सर्कल पूरा करके दोबारा नहीं आ सकते हो, वो रेंज से बाहर चले जाएंगे। तो पॉजिटिव साइड पे वी डोंट हैव एनी अदर पॉसिबिलिटी, तो हम इसको नहीं और आगे नहीं जाएंगे। बट नाउ वी हैव टू बी केयरफुल, जो आपका ए का इंटरवल हमने कैलकुलेट किया है उसमें नेगेटिव साइड भी आ रही है, तो आपको क्लॉकवाइज जाके भी चेक करना पड़ेगा। ऑलराइट, लेट्स गो क्लॉकवाइज नाउ। क्लॉकवाइज हमें पहला एंगल कौन सा मिलता है? दिस इज द फर्स्ट एंगल दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल इज पाई, स्ट्रेट लाइन का एंगल पाई होता है, उसमें से अल्फा माइनस कर दें तो वो क्या होएगा? 0.6155। बट रिमेंबर वी आर गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव एंगल होएगा। या फिर आप माइनस पाई प्लस 0.6155 भी कर सकते हैं डायरेक्टली, दैट्स ओके। लेट्स सी व्हाट दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी। pi minus 0.6155, that is giving me minus 2.526. Is that in the interval? Well, that is also in the interval. ये इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, तो आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो वी हैव 3 पॉसिबल वैल्यूज। फिर आप क्या कर सकते हो, आप एक पूरा सर्कल ये इस साइड पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जा सकते हो नेगेटिव साइड से, but you would realize this is going to be outside the interval. आप चेक कर सकते हैं, but it's pretty obvious as well. आप काफी -3.3 के पास ऑलरेडी पहुंच गए हो इसी क्वाड्रेंट में, राइट? तो और करोगे तो वो इंटरवल से बाहर ही जाएगा, तो उसमें आपको और जाने की जरूरत नहीं है। So these are 3 different possible values of a that we are getting. जब ये आ गई, अब आपने क्या करना है इस पॉइंट पे, वापस वो सब्स्टिट्यूशन इनपुट कर देनी है। क्या सब्स्टिट्यूशन थी? a equals 3x plus 1.2। a की जगह पे वापस डाल दें 3x plus 1.2, that is either equal to this or it's equal to this or that is equal to this। इन तीनों से x की वैल्यूज आ जाएंगी, इसमें से 1.2 माइनस करें और फिर 3 से डिवाइड कर दें। Let's see what we get from that. 0.6155 minus 1.2 divided by 3, and that's giving me minus 0.1948. So that's 0.195. This is one possible answer that I'm getting. 3.757 minus 1.2 divided by 3, and that gives me 0.852. And then the last one, minus 2.526 minus 1.2 divided by 3, and that's giving me minus 1.242. उसने कोई क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन तो नहीं दी हुई, डेसिमल प्लेसेस है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, उसने नहीं दी हुई। These are the 3 answers that we are getting from this. Minus 0.195, 1.242 and 0.852. ये आपके पास 3 possible values of x, and this is what we were looking for there. All right, I hope that makes sense. That was question number 10 from this paper. Let's move on to question number 11. Okay, so now we are given this integral. We need to show that this integral with limits 1 to a is ln of 1 over 5. This is what we need to show, where a is greater than 1. अच्छा नहीं, उसने इनफैक्ट ये बताया हुआ है, मैं शो नहीं करना। उसने बताया कि ये इंटीग्रल इसके इक्वल है। गिवन दिस यू हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फिगर आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रल इवैल्यूएट करेंगे, उसको ln of 1 over 5 से कंपेयर करेंगे और ए की वैल्यू फिगर आउट करेंगे। लेट्स डू दिस नाउ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी फिगर्ड अबाउट द लिमिट्स फॉर नाउ एंड वी जस्ट इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन। अलग अलग 3 फ्रैक्शंस है ना, तो तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना है हमें। Let's write them down separately first of all. So we have 3 over 3x plus 2 minus integral of 2 over 2x plus 1 minus integral of 1 over x. इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, राइट? तीनों फ्रैक्शंस को अलग अलग इंटीग्रेट कर दें। व्हाट अबाउट द फर्स्ट फ्रैक्शन? अच्छा देखें, फर्स्ट फ्रैक्शन ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। देखें इस पे पावर रूल नहीं अप्लाई हो सकता, रिमेंबर, बिकॉज अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर -1 हो जाएगी। दैट रूल विल नॉट वर्क हियर। लॉग रूल अप्लाई हो सकता है। व्हाई? बिकॉज 3x plus 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? 3। वी हैव दैट इन द न्यूमरेटर। इफ
the numerator is the derivative of the denominator. इसका integral simply हम क्या लिख सकते हैं directly? ln of the denominator. So this is pretty straightforward. ये आपके पास आ गया ln of 3x plus 2. All right. Minus integral of this. Again, we have the derivative of the denominator. 2x plus 1 का derivative क्या होता है? 2. We have that in the numerator. So ये ln वाली form है directly. हम क्या करेंगे? इसकी integration क्या हो जाएगी? ln of 2x plus 1. Again, we have 1 over x here. 1 over x की integration क्या होती है? ln x. So we have minus ln x. So integration वाली इसमें जो working थी वो तो बहुत straightforward थी. Now we just have to input limits. Limits are from 1 to a. Let's input the limits. एक दफा a input करते हैं. We get ln of 3a plus 2 minus ln of 2a plus 1 minus ln a. Subtract from that the case when we input 1, and that gives us ln of 3 into 1 plus 2 minus ln of 2 into 1 plus 1 minus ln 1, and you close the second bracket. Okay? We are given that this whole thing is equal to ln of 1 over 5. Right side पे आपके पास equation में ln of 1 over 5 है. पहले इसको simplify कर लेते हैं पहले, and then we'll do that, use that. So we have ln of 3a plus 2 minus ln of 2a plus 1 minus ln a minus ln of 3 plus 2, which is 5, minus ln of 2 plus 1, which is ln of 3, and then minus ln 1 to 0 होता है, that's just 0. Okay, I'm sorry about this. ये minus बाहर लगा हुआ है, तो ये पहले टर्म से तो minus आ गया, बाकी दोनों टर्म्स यहाँ पे प्लस हो जाएंगे. Okay, this is what we have. And we are given that this is equal to what? ln of 1 over 5. ये ln of 1 over 5 के equal होना चाहिए. Equation के right side पे हमारे पास क्या है? ln of 1 over 5. Remember that. हमें एक ही value figure out करनी है. What can we do now? Left side को अगर हम simplify कर लें किसी तरह से कि single ln term बन जाए, because right side पे देखें single ln term है, तो left side पे we want to make it a single ln term somehow. देखें सब ln terms के बाहर +1 या -1 आ रहा है, कोई और नंबर नहीं आ रहा, so we are good with that. मल्टीप्लिकेशन लॉ, डिवीजन लॉ यूज करने वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ऑलरेडी, हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा. जिस भी टर्म के साथ माइनस आ रहा है हम इसको सिंगल ln टर्म में कन्वर्ट करके क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लॉ इकट्ठे यूज कर लेंगे. जिस भी टर्म के साथ बाहर प्लस लगा हुआ है वो न्यूमरेटर में आएगी, और जिसमें माइनस लगा हुआ है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगी. So this is going to become 3a plus 2. That's what we have in the numerator. Second term के साथ माइनस है, ये चले जाएगी डिनोमिनेटर में. We have 2a plus 1. Then you have minus ln a. So ये भी a कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा इधर. Then you have 5, that is also going to be in the denominator. 5 भी नीचे मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में. Then you have plus ln 3, वो न्यूमरेटर में आएगा. So we have 3 here like this, and that's it. This is equal to ln of 1 over 5. So we have a single ln term on both sides now. Now what we can do is we can say since ln of this expression and this expression they are equal, तो जो अंदर वाले पार्ट्स हैं ये भी इक्वल होने चाहिए. तो ln को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं. एक तरह से आप you can think of it like cancelling, लेकिन ये नहीं करना कि पिछली टर्म में कैंसिल कर दें कि हर टर्म में ln आ रहा है तो उसको कैंसिल कर दें. That is not going to work. Okay, this is not a number. ln कोई नंबर नहीं है जो आप कॉमन ले रहे हैं. आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लॉ अप्लाई करके क्या किया? दोनों साइड से पहले सिंगल ln टर्म में कन्वर्ट किया है. सिंगल ln टर्म में कन्वर्ट करने के बाद you can say since ln of this thing is equal to ln of this thing, the parts, the expressions inside should be equal. So what do we have then? Numerator में हमारे पास है 3 into 3a plus 2, that's 9a plus 2 into 3, that's 6, divided by 5a into 2a plus 1. What would that be? 5a into 2a, that would be 5 into, that's 10a squared, right? Then you have plus 5a.
On the right side, you have 1 over 5. Now you can solve this equation, cross multiply. That is going to give you 9a plus 6 into 5. Multiply कर देते हैं already. 5 into 9 is 45a. Plus 6 into 5 is 30. And on the other side, you have 10a squared plus 5a. Take everything to one side. That would give you 10a squared plus 5a minus 45a. That would be minus 40a minus 30 equals 0. We can simplify this. 10 से divide कर दें पूरे equation को. And we would get a squared minus 4a minus 3 equals 0. Can we factorize this? Yeah. Well, minus आ रहा है यहाँ पे. So 3 plus 1 करके हो सकता है, but that is not going to work. Factorization नहीं कर सकते यहाँ पे. 3 plus 1 are not going to work. तो हमें क्या करना पड़ेगा? Quadratic formula use करना पड़ेगा. Let's use the quadratic formula. अच्छा, एक ही उसने exact value मांगी हुई है. डेसिमल्स में नहीं आंसर देना, exact value चाहिए तो quadratic formula use करेंगे. तो डेसिमल्स में value आएंगी, वैसे तो आपने डेसिमल्स में नहीं लिखनी है, इसको exact form में रहने देना. Minus into minus 4 plus minus square root of minus 4 whole squared minus 4 into 1 into minus 3 divided by 2 into 1. All right, let's simplify this. That gives us 4 plus minus square root of 4 ka square is 16 plus 12, and in the denominator we have 2. So that gives us 4 plus minus square root of 28 divided by 2. ये आप क्या इसका ट्रिक क्या होता है? कैलकुलेटर में डाल दो. कैलकुलेटर आपको सिंप्लीफाई करके दे देगा, अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता हुआ तो. ठीक है, 28 कैन एक्चुअली रिटन लाइक दिस, 2 स्क्वायर्ड इनटू 7, तो 2 को आप उठा के बाहर लग सकते हो, बट आप कैलकुलेटर में डालें, कैलकुलेटर विल डू दिस वर्क फॉर यू. कैलकुलेटर आपको दे देगा, ये आप कैलकुलेटर में डालेंगे, दैट शुड गिव यू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7. All right, then you can simplify this. 2 common लेके denominator से divide हो जाएगा, and you're left with 2 plus minus square root of 7. So एक ही हमारे पास ये 2 possible values आ रही हैं. जब भी multiple possible answers आ रहे हैं ना आपके पास, आपने एक चीज करनी है, चेक कर लेना है क्या वो possible हैं कि नहीं है सारे. Let's go to the question. Question statement जो होती है ना, बहुत exact होती है, बहुत precise होती है. उसने क्या लिखा है यहाँ पे? उसने कहा find the exact value of it. वैल्यूज नहीं लिखा उसमें, उसने कहा वैल्यू ऑफ ए. इसका मतलब है एक ही आंसर होना चाहिए. अब हाउ डू वी नो व्हिच वन ऑफ दीस टू आंसर्स इज करेक्ट एंड व्हिच वन इज नॉट करेक्ट? उसने एक कंडीशन दिया है यहाँ पे. उसने कहा ए इज ग्रेटर देन 1, बिकॉज देखें ए अगर 1 से बड़ा नहीं होएगा ना, तो यहाँ पे क्योंकि आपके पास ln आ रहा है, तो 1 से बड़ा नहीं होगा, तो इधर पे मसला हो सकता है कहीं पे. कहाँ हो सकता है मसला? 1 से बड़ा नहीं होएगा तो यहाँ पे भी मसला नहीं होगा वैसे, या 0 से बड़ा होना चाहिए. दैट्स कंडीशन फॉर लॉग हियर. लेकिन यहाँ पे उसने क्वेश्चन के अंदर कहा है कि 1 से भी बड़ा होना चाहिए. ओके, दैट्स ओके. सो 1 से बड़े वैल्यू होनी चाहिए इनकी. इसका मतलब ये है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 वाला जो आंसर है वो तो नेगेटिव में चला जाएगा, वो आपको नहीं कंसिडर करना. आपको सिर्फ एक आंसर लिखना है. तो क्या होएगा? a इक्वल्स 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7. माइनस वाला आंसर आपको इग्नोर करना है. दोनों आंसर्स लिखेंगे तो आपका एक मार्क यहाँ पे कट जाएगा. ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है a is greater than 1. So you have to use that condition and give only one value as the final answer. ठीक है, so a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 plus square root of 7. That's it. That was question number 11. Let's move on to question number 12 now. That's the last one that we're going to do from this paper. Okay, so it says it is given that y equals 3x squared minus 2 whole raised to power 2 over 3 divided by x minus 1 for x greater than 1. We need to write dy over dx in this form where a and b are integers. Derivative निकालना है और उसको इस form के अंदर लिखना है. Now, how do you differentiate this thing? Part A. We have 3x squared minus 2 whole raised to power 2 over 3 divided by x minus 1. And we're given that x is greater than 1. ये उसने साथ उसकी domain दी हुई है. We have to find derivative of this thing. It's a fraction. Fraction तो कैसे differentiate करते हैं?
We have a rule for that. That's called the quotient rule. ये क्या आएगा? U over V का डेरिवेटिव क्या होता था? That's V U dash minus U V dash divided by V square. Okay. So numerator यहाँ पे क्या है? वो U है. Denominator is V. Let's differentiate it and see what we get from that. dy over dx. What is that going to be? U over V. तो numerator हम क्या रख रहे हैं? U. Denominator is V. dy over dx क्या हो जाएगा? vu dash, that means V as it is, which is x minus 1 into derivative of U. U का derivative क्या होएगा? Power से multiply किया, 2 over 3 से multiply किया, जो अंदर वाला expression है that remains as it is. Subtract 1 from the power. 2 over 3 में से 1 minus किया, that gives us minus 1 over 3, and then you multiply by the derivative of this part. 3x square minus 2 के derivative से multiply भी करना है. What is the derivative of 3x square minus 2? 3x square का derivative is 6x. So we multiply by 6x here. 2 का derivative is 0. So we can just ignore that. Subtract from that uv dash. U as it is, that means 3x squared minus 2 whole raised to power 2 over 3 as it is, multiplied by v dash, derivative of x minus 1. X minus 1 का derivative क्या होएगा? That's just going to be 1. Whole divided by v squared, which is x minus 1 whole squared. ठीक है? Now we have got this part at least, जो denominator में चाहिए हमें x minus 1 whole square, numerator में ये किस तरह से लेकर आना है. What do we do now? सबसे पहले cancellation कर लेते हैं. देखें ये 3 और ये 6 cancel हो गए, हमें 2 दे देते हैं यहाँ पे. So what are we left with the numerator? 2x into 2, that is 4x. 4x into x minus 1 into 3x squared minus 2 whole raised to power minus 1 over 3. Subtract from that 3x squared minus 2 whole raised to power 2 over 3 divided by x minus 1 whole square. ठीक है, अब क्या हुआ? हमारे पास ये फॉर्म आ गई. अब देखें उसने वो यहाँ पे क्या कहा हुआ है. आपको न्यूमरेटर में ये एक्सप्रेशन चाहिए, एग्जैक्टली दिस एक्सप्रेशन. इसमें क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 2 होल रेज टू पावर माइनस 1 over 3 उसने कॉमन लिया हुआ है. अब हमारे पास तो 3x स्क्वायर माइनस 2 होल रेज पर माइनस 1 over 3 कॉमन नहीं आ सकता, बिकॉज एक में तो माइनस 1 over 3 आ रहा है और दूसरे में पावर 2 over 3 है. थिंक अबाउट दिस. 2 over 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस 1 over 3 plus 1, दैट इज इक्वल टू 2 over 3. हमने ऊपर भी ये किया था ना, 2 over 3 में से माइनस 1 किया था तो माइनस 1 over 3 आया था. तो हम क्या कर सकते हैं? इंडिसेस रूल्स यूज करके इस एक्सप्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट्स में. कैसे ब्रेक होएगा? जिस तरह अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस हो x raised to power 5, that's the same thing as x raised to power 2 into x raised to power 3. दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं ना इस तरह से. इसी तरह से हम इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमने पावर माइनस 1 over 3 वाला पार्ट कॉमन लेना है, तो हमें सेकंड एक्सप्रेशन में भी पावर माइनस 1 over 3 चाहिए. उसके लिए we can use this trick. We can say ये फर्स्ट एक्सप्रेशन फर्स्ट टर्म तो वैसे ही होगी 4x square minus 4, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं. अंदर आपके पास क्या बचा? 3x squared minus 2 whole raised to power minus 1 over 3. सेकंड एक्सप्रेशन के सेकंड टर्म के अंदर we can split this power like this. We can say this is 3x square minus 2 whole raised to power minus 1 over 3 into 3x square minus 2 whole raised to power 1. माइनस 1 over 3 और 1 दो में इसने हमने ब्रेक कर दिया. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यही वापस मिल जाता. हमने उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया. इसका फायदा क्या हुआ? अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम 3x square minus 2 whole raised to power minus 1 over 3 दोनों टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं. Let's do that now. So we have 3x square minus 2 whole raised to power minus 1 over 3 common. What are we left with in the other part? 4x squared minus 4 minus 3x square minus minus 2, that is plus 2.
and in the denominator, okay, again, there is another careless error here. 4x square minus 4 जब ये multiply किया है तो ये 4x square minus 4x होना चाहिए था. Sorry about that. It should have been 4x here. So how did I figure that out? Because यहाँ पे हमें एक x term भी चाहिए थी, तो यहाँ पे x term नहीं आ रही है, इसका मतलब का मसला है. तो I just realized यहाँ पे जब multiplication किया 4x into 1 ये 4x होना चाहिए था. मैंने सिर्फ 4 लिख दिया, so यहाँ पे आ गया आपके पास 4x. All right, in the denominator, we have x minus 1 whole squared. Let's simplify this and see what that gives us. 3x squared minus 1 whole raised to power minus 2 whole raised to power minus 1 over 3. In the denominator, we have x minus 1 whole squared. ये part आपके पास आ गया जो उसने मांगा हुआ था, और ये फिर एक quadratic expression multiply हो रही है. What is that expression? Let's simplify this now. 4x square minus 3x square, that is x squared, and then you have minus 4x plus 2. ये अब आपके पास इस फॉर्म के अंदर आ गया. फर्स्ट टर्म देखें उसने बताई हुई है x स्क्वायर होनी चाहिए, तो अगर आपको एरर हो रहा है तो आपकी फर्स्ट टर्म x स्क्वायर नहीं आ रही होगी, तो यहाँ पे x स्क्वायर आ गया. minus 4x plus 2, that is what we wanted to prove here. All right, ये आपका डेरिवेटिव आ गया उस फॉर्म में जो उसने मांगा हुआ था. Let's move on. In the second part, in part B now, it says find the approximate increase in y as x increases from 2 to 2 plus p. Okay, now what does that mean? Approximate increase in y as x increases from 2 to 2 plus p, where p is small. Okay, now let's think about this. That's slightly tricky. Let's write down that derivative here. dy over dx, that is equal to 3x squared minus 2 whole raised to power minus 1 over 3 divided by x minus 1 whole squared multiplied by x squared minus 4x plus 2. ये आपका डेरिवेटिव है जो आपने पिछले पार्ट में निकाला. उसने कहा है क्या चेंज आती है 2 से लेकर 2 plus p तक. Okay, now how can we figure that out? You can try and see what happens first of all when x is equal to 2. x equals 2 के ऊपर dy by dx की क्या वैल्यू है, सबसे पहले तो ये फिगर आउट कर लें. ठीक है, x equals 2 के ऊपर डेरिवेटिव को क्या वैल्यू देता है. Let's figure that out first of all. Okay, let's input x equals 2 here. ये आप निकाल लें, बेशक कैलकुलेटर में निकालें. It's just a 2 mark question, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है आपको. 2 इनपुट कर दें इसके अंदर, कैलकुलेटर में डाल दें पूरा एक्सप्रेशन, input 2 and see what your calculator gives you for that. Okay, let's try that. 3 into 2 squared minus 2 whole raised to power minus 1 over 3. And then this whole thing divided by 2 minus 1 whole squared, वो तो 1 ही होएगा, तो न्यूमरेटर में तो 1 ही आ रहा है आपके पास, इसका फ्रैक्शन नहीं लिखें. Then this whole thing is multiplied by 2 squared minus 4 into 2 plus 2. Okay, when I put this whole thing on my calculator is giving me minus 0.928. Okay, x equals 2 के ऊपर आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, आपके पास ये वैल्यू आ रही है 0.9283. x equals 2 के ऊपर, this is the rate of change that we have. कि अगर आप थोड़ा सा x को चेंज करते हो, remember dy over dx represent क्या कर रहा हूँ, dy over dx represents it represents the change in y for a very small change in x. उस point पे आपका gradient है उस curve का, right? This is the gradient of the curve at this point, minus 0.9283. अब आप थोड़ा सा इसमें इंक्रीज करते हो, अगर 2 से आप चले जाते हो 2 plus p पे,
अब उस स्मॉल चेंज से आपके इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या फर्क पड़ेगा, दैट इज व्हाट वी नीड टू फिगर आउट. ऑलराइट, नाउ लेट्स थिंक अबाउट दिस. So it's basically about the understanding of this derivative. इस derivative का मतलब क्या है? देखिए, dy by dx is equal to minus 0.9283, right? So आपके पास जो derivative आ रहा है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा होता है? अगर आपकी कोई कर्व है इस तरह से, लेट्स से इस पॉइंट पे x की वैल्यू 2 है, इस पॉइंट के ऊपर ये कर्व का ग्रेडियंट बता रहा होता है आपको कि what is the change in y for a very small change in x. y में थोड़ी सी आप चेंज करो, बिल्कुल थोड़ी सी चेंज, तो x में कितना चेंज, x में थोड़ी सी चेंज करो तो y में कितना चेंज आता है. दिस इज बेसिकली rate of change of y with respect to x. अगर आप x में थोड़ा सा चेंज करते हो तो y में कितना चेंज आता है, दैट इज व्हाट इज दिस इज गिविंग यू. तो आपको एक तरह से इससे क्या मिलता है? इट्स बेसिकली गिविंग यू चेंज इन y ओवर चेंज इन x equal to minus 0.9283, where delta y and delta x are small changes in x and y. राइट, बिल्कुल पास पास के, इस पॉइंट के बिल्कुल पास हल्का सा अगर आप चेंज करते हो तो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग जो दूसरा वेरिएबल है उसमें कितना चेंज आता है. So these two represent small changes in y and x. तो ये dy by dx आपको क्या देता है? ये आपको देता है कि थोड़ा सा y में, थोड़ा सा x में चेंज करने से y पे क्या इफेक्ट पड़ता है. तो डेरिवेटिव से आपको 2 पे ये मिल गया कि पॉइंट 2 के ऊपर ना, this is the rate of change with respect to change in y, और change in y with respect to change in x, right? अब आपको change in x उसने बताया है और उसने कहा है कि this is a very small change. उसने कहा है p is small and this is only valid for small values. ये जो change in y over change in x हम कह रहे हैं इसके इक्वल है, ये कर्व है क्योंकि ये सिर्फ इस पॉइंट के या बिल्कुल इसके आसपास वाले रीजन के लिए वैलिड है. What is the change in x now? The change in x is given as p. So it is saying change in y over p is equal to minus 0.9283. तो जो change in y यहाँ पर आएगा आपके पास, delta y आप उसको कह सकते हैं, या आप change in y words में भी लिख सकते हैं. What is that going to be? That is going to be minus 0.9283 times p. Because ये आपको rate of change of y with respect to x दे रहा है, derivative for small changes in x. This is what this represents. कि अगर आपका x में थोड़ा सा बिल्कुल चेंज आता है, very minute, तो corresponding जो change in y होगा वो इस फैक्टर से हो रहा होगा, minus 0.9283 multiplied by p. Okay? So आपने 2 पे evaluate किया डेरिवेटिव क्या आ रहा है और फिर आपने देखा अच्छा उससे बिल्कुल आसपास किस तरह से चेंज हो रहा होगा. That's how you could think of it. All right, so that was question number 12 from this paper. So we're done with paper 1-2 and paper 1-3 from November 2022. इनके हमने जो थोड़े ज़्यादा complicated वाले questions थे, we have looked at them already. Let's move on to the next paper now, which is November 22 paper 2 variant 2. Okay, let's have a 30 seconds break again, 30 seconds to 1 minute break before we start with this next one. Just a reminder that you have a lot of other helpful content on this channel for admins as well. You can have a look at the description below. You'll find most of the content covered in detail, along with topical practice questions. You'll also find some quick revision videos for a number of topics. Uski bhi playlist aapko niche description mein mil jayegi. You can also have a look at that. और फिर ये yearly past papers वाली जो playlist है, I'll keep adding to this for the next week or so जब तक आपका paper 2 होता है. Paper 1 और paper 2 में कोई खास difference नहीं होता admins में. It's the same syllabus, it's the same number of marks,
बस क्वेश्चंस का नंबर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और उनके नंबर ऑफ मार्क्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं पर क्वेश्चन। पेपर 2 में थोड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं बट अदरवाइज इट्स द सेम टॉपिक। सो आप प्रैक्टिस करें, पेपर 2 की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इन दिस सेशन, इन द नेक्स्ट hour and a half or so, we will do the paper 2s of November 2022 as well. उनके जो थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे अभी हम, ठीक है? और in fact what I'll do is yes, so let's actually keep it like this way. इसको as it is रखते हैं. I was just thinking if I should start in a different session for that, or I should keep it this way. कितना टाइम हो गया? It's almost 2 hours. Okay. I'm just going to end this session और फिर मैं एक नया session start कर रहा हूँ जिसमें I will be doing these the next 2 papers. Okay. Just stay tuned. I'll just start the next one in 1 minute right away. Okay.